Hi guys, this is Chef Amir Iqbal. मैं बनाऊंगा आपके लिए the most authentic flavorful pasta with Alfredo sauce. Pasta is one of my favorite dishes और आज मैं आपको बताऊंगा how to enhance the flavors of a pasta dish. To enjoy the real flavors, the pasta should be al dente, जिसका मतलब है it should be half boiled. पास्ता को perfectly boil करने के लिए you need 4 things. Number 1, boiling water. Number 2, salt, oil and timing. जब आपका पास्ता अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा, then I want you to strain it and rinse it through cold water. The reason is to stop the cooking process. अगर पास्ता overcooked होगा, तो it will be gummy and unpleasant, जिसकी वजह से you will lose all the flavors. Okay, the next thing is the perfect Alfredo sauce. Heat the pan well. उसके बाद olive oil or cooking oil, anything. So the next ingredient will be the chopped garlic. So once your garlic is brown, to add a bit of chicken stock and I have got fresh mushrooms. आप चाहें तो कैन वाले मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं और उसमें आपने तकरीबन 1/4 कप के करीब मिल्क ऐड करना है. अब हम इसमें ऐड करते हैं फ्रेश क्रीम. हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, रेड चिली क्रश्ड एंड स्टिर इट वेल. हम इसके अंदर ऐड करेंगे पास्ता and grate the cheese directly into the sauce. That's it. जब भी जहां भी जो भी रेसिपी आप बनाएंगे, I just want you to remember these top tips so that you can enjoy the real flavor of pasta.